भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवते पंचम स्कंधे अथ प्रथमो अध्यायः। राजोवाच। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजर्षभ गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुम् अर्हति महतां खलु विप्रर्षे उत्तम श्लोकपादयोः छायानिवृत्त चित्तानां न कुटुम्बे स्पृहा मतिः संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु शक्तस्य यत्सिद्धिर्भूत कृष्णे चामतिरच्युता। श्री शुक उवाच। बाढमुक्तं भगवत् उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दं करन्दरस आवेशितचेतसो भागवत परमहंस दयितकथां किञ्चिदन्तराय विहितां स्वां स्योत्तमां पदवीं न प्रायेण हिन्वति यर्हि भावः राजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतः परं भागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाञ्ज सावगत परमार्थ सततो ब्रह्मक्षत्रेण दीक्षिष्यमाणो अवनितल परिपालन याम्नाथ प्रवर गुणगणैकांत भाजनतया स्वपित्रोपामन्त्रितो भगवते वासुदेव एवाव्यवधान समाधि योगेन समावेशित सकल कारक क्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दत्यपि तद प्रत्याम्नातव्यं तदधिकरण आत्मनोऽन्यसां दशतोऽपि पराभवमन्वीक्षमाणः। अथ हा भगवान् आदिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिब्रहणान् अनुध्यान व्यवसित सकल जगद अभिप्राय आत्मयोर्निखिल निगम निज गण परिवेष्टितः स्वभवनाद अवततार स तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमानाबलिभिरनुपथ ममर परिव्रढैरभिपूज्यमानः पथि च वरूथसः सिद्ध गन्धर्व साध्य चारण मुनि गणैरुपरगीयमानो गन्धमादन् द्रोणीं बभाषयन्नुपसर्प तत्र हा वा एनं देवर्षि हंसयानेन पितरं भगवतं हिरण्यगर्भम् उपलभमानः सहसैवोत्थाय आर्हणेन सह पिता पुत्राभ्यां बहिताञ्जलिरुपतस्थे। भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सूक्तवाक्येनातितराम् उदितगुणगणावतार सुजयः प्रियव्रतम् आदिपुरुषस्तं सदयहासावलोक इति होवाच। श्री भगवान उवाच। निबोधतातेदमृतं ब्रवीमि मा सूयितुं देवमर्हस्य प्रमेयं वयं भवस्ते तत एष्महर्षिर्वहाम सर्वे विवशायस्य दिष्टं न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात् भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं सुखाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोगम् अव्यक्तदिष्टं जनताङ्ग धत्ते।
यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरैर्वत्सपयं सुयोजिताः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता न शिवद्विपदे चतुष्पदः ईशाभिसृष्टं ह्यवरुन्धमहेङ्गं दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात् आस्थाय तत्तद्यद् युङ्क्तनाथश्चक्षुष्मतान्धा योनीयमानाः मुक्तोऽपि तावद् बिभ्रत्यात् स्वदेहम् आरब्धमश्नन्नभिमानशून्यः यथानुभूतं प्रतियाति निद्राः किं त्वन्यदेहाय गुणान्न वृङ्क्ते भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद् यतः स आस्ते सहसट्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य ग्रहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यं यः सट्सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्वेश्य यतेत पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन् क्षीणेषु कामं विचरेद्विपश्चित् त्वं त्वब्जनाभाङ्घ्रि सरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जितसट्सपत्नः भुङ्क्ष्वेः भोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व। श्री शुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवस्त्रिभुवन इति समभिहितो महाभागवतो भगवतस्त्रिभुवन गुरोरनुशासनम् आत्मनो लघुत यावनत् शिरोधरो बाढ़मिति बहुमानम् ओवाह। भगवानपि मनुना यथावद् उपकल्पिता पचितिः प्रियव्रत नारदयोर्विषम् अभिसमीक्षमाण योरात्मसमवस्थान् वाङ्मनसम् क्षयम् अव्यवहृतं प्रवर्तयन् गमत्। मनुरपि परेणैवं प्रतिसन्धित मनोरथः सुरर्षि वरानुमतेन आत्मजम् अखिलधरामण्डल स्थिति गुप्ते आस्थाप्य स्वयमति विषम विष जलाशयाशाया उपरराम। इतिहा वाव सा जगति पतिरीश्वरेच्छाया अधिनिवेशित कर्माधिकारो अखिल जगत बन्धध्वंसन परानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्याङ्घ्रि युगल अनवरत ध्यान अनुभावेन परिरन्धित कषायाशयो वदातोऽपि मानवर्धनो महतां महीतलम् अनुशशास। अथ च दुहितरं प्रजापतेर्विश्वकर्मण उपयेमे बर्हिष्मतीं नाम तस्यामु हा वाव आत्मजानात्मसमानशील गुणकर्म रूप वीर्योदारान्दश भाव यां बभूव कन्यां च यवीय श्रीमूर्जस्वतीं नाम। आग्नेन्द्रेद्म जिह्वग यज्ञबाहुं महावीर हिरण्यरेत ओघ्रत पृष्ठ सवन मेधातिथि बीतिहोत्र कवय इति सर्व एवाग्नि नामानः। एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रय आसन्नूर्ध्वरेतसस्त आत्मविद्यायाम् अर्भभावादारभ्य कृतपरिचयाः पारमहंस्यमेवाश्रमं भजन्। तस्मिन्नु हा वा
उपशमशीलाः परमर्षयः सकलजीवनिकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दा विरत स्मरणा विगलित परम भक्ति योगानुभावेन परिभावितान् हृदयाधिगते भगवति सर्वेषां भूतानामात्मभूते प्रत्यगात्मन्ये वात्मनस्तादात्म्य आत्मविशेषेण समीयुः। अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्नुत्तम स्तामसो रैवत इति मनवन्तराधिपतयः। एवं उपसमायनेषु स्वतनेष्वथ जगतीपतिर्जगतीम्बुदान्येकादश परिवत्सराणाम् अव्याहताखिल पुरस्कार संभृत दोर्दंड युगल पीड़ित मौरवी गुणस्तनित विरमित धर्म प्रतिपक्षोर बर्हिष्मत्याश्चानुदिन मेधमान प्रमोद प्रसरण यौशन्य व्रीडा प्रमुषित हासावलोक रुचिरक्ष वेल्यादिभिः पराभूयमान विवेक एवान बबोध्यमान एव महामना बुभुजे यावदौ भाषयति सुरगिरिमनुपरिक्रामन् भगवानादित्यो वसुधातलमर्धेनैव प्रतपत्यर्धेनावच्छादयति तदा हि भगवदुपासनोपचितातिपुरुष प्रभावस्तदन अभिनन्दन समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणे मनुपर्यक्रामद द्वितीयो पतंगः ये वा उ हा तद्रथ चरणनेमीकृत परिघातास्ते सप्त सिन्धव आसन यत एव कृताः सप्त भुवो द्वीपाः जम्बूप्लक्ष शाल्मली कुश क्रौंच शाक पुष्कर संज्ञास्तेषां परिमाणं पूर्वस्मात् उत्तरो यथासंख्यं द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्लृप्ताः चारोदेक्षुरशोद शुरोद घृतोद दक्षिरोद दधिमण्डोद शुद्धोदाः सप्त जलधयः सप्त द्वीपपरिखा अभ्यन्तर द्वीप समाना एकैकस्येन यथानुपूर्वं सप्तस्वपि बर्हिद्वीपेषु पृथक् परित उपकल्पितास्तेषु जम्बादिषु बर्हिष्मति पतिर अनुव्रतान् आत्मजान आग्नेन्द्रियम जिह्व यज्ञबाहु हिरण्यरेतो घृत पृष्ठ मेधातिथि पीतिहोत्र संज्ञान यथासंख्येन एकैकस्मिन्नेकमेवाधिपतिं विदधे दुहितरं चोर्जस्वतीं नामोशनसे प्रायच्छद्यस्याम् आसीद देवयानी नाम काव्यसुता नैवं विधः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसा जितसंषड्गुणानां चित्रं विदुर्विगतः सकृदादगीत यन्नामधेयम् अधुना सा जहाति बन्धम् स एवं परिमित बल पराक्रम एकदा तो देवर्षि चरणानु अनशयानु उपतित गुण विसर्ग संसर्गेणा निवृत्तम इवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह अहो असाध्वनुष्ठितं यदि विनिवेशितोम अहम इन्द्रियैरविद्यारचित विषयं विषयान्धकूपे तदलमलमुष्या वनिताया विनोदमृगं मां धिग्धिगति गर्हयाञ्चकार
परदेवता प्रसादाधिगतात्म प्रत्यवमर्षे नानुप्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य इमां यथादायं विभज्य भोक्तभोगां च महिषीं मृतकमिव सह महाविभूतिं पहाय स्वयं निहित निर्वेदो हरति गृहीत हरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुशशार। तस्य हा वा एते श्लोकाः। प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्याद्विनेश्वरं यो नेमिनिं नैर्करोच्छायां घ्नन् सप्तवारिधीन् भूसंस्थानं कृतं येन शरदगिरिवनादिभिः सीमां च भूतनिर्वृत्ये द्वीपे द्वीपे विभागशः भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजं यश्चक्रे निर्यौपम्यं पुरुषानुजनप्रियः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे प्रियव्रत विजये प्रथमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वितीयो अध्यायः। श्री शुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्नेन्द्रो जम्बूद्वीपौकसः प्रजा और वर्धमावेक्षमाणः पर्यगोपायत्। स च कदाचित् पितृलोककामः शूरवरवनिता क्रीडाचलद्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजां पतिमाभृत परिचर्योपकरण आत्मैकाग्र्येण तपस्व्याराधयां बभूव। तदुपलभ्य भगवान् आदिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तीं नाम अप्सरसमभियापयामास। सा च तदाश्रमोपवनम् अतिरमणीयं विविधनिबिड बिटप निकर संश्लिष्ट पुरटलतारूढ़ स्थल विहंगम मिथुनैः प्रोच्यमान श्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कुट कारंडव कलहंस आदिभिर्विचित्रम् उपकूजितामल जलाशय कमलाकरमुप बभ्राम। तस्याः सुललित गमन पद विन्यास गति विलासायाश्च अनुपदम खड़खड़ायमान रुचिर चरणाभरण स्वर्ण उपाकर्ण्य नरदेव कुमारः समाधियोगेनां मीलित नयन नलिन मुकुल युगल मीश द्विकचय्य व्यचष्ट। तामेवा विदूरे मधुकरीमिव सुमनस उपजिंघ्रति दिविज मनुज मनोनयनाह्लाद दुघैर्गतिर्विहार व्रीडा विनयावलोक सुस्वराक्षरावयवैर्मनसि नृणां कुसुमायुधस्य विदधतीं विवरं निजमुख विगलितम् अमृताशवश हासभाषणाम् ओदमदान्ध मधुकर निकरोपरोधेन द्रुतपद विन्यासेन बल्गुष्पन्दनस स्तन कलश कवर भार रसनां देवीं तद अवलोकनेन विव्रतावशरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशमुपनीतो जडवदिति होवाच। का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्यशैले मायासि कापि भगवत परदेवतायाः विज्ये बिभर्षि धनुषि सुहृदात्मनोऽर्थे किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान् बाणाभिमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्खुरुचिरावते तिग्मदन्तौ कस्मै युयुङ्क्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तौ विक्रमोऽस्तु। शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति सामसरहस्यं
जश्रमीशं युष्मच्छिखा विलुलिताः सुमनोभिवृष्टिः सर्वे भजन्त्रिषिगणा इव वेदशाखाः वाचं परं चरणपञ्जरतित्तिरीणाम् ब्रह्मन्नरूपमुखरां शृण्वाम तुभ्यं लब्धा कदम्बरुचिरङ्कबिटङ्कबिम्बे यस्यामलात् परिधिः क्वचबल्कलं ते किं संभृतं रुचिरयोर्द्विजशृङ्गयोस्ते मध्ये कृशो वहसि यत्र दृशिः श्रिता मे पङ्कुरुणाः सुरभिरात्मविषाण ईदृग् येनाश्रमं सुभग मे सुरभिः करोषि लोकं प्रदर्शय सुहृत्तं तावकं मे यत्र इत्थमुर्षावयवाव पूर्वौ अस्मद्विधस्य मनयुन्यनौ बिभर्ति बहुवद्भुतं सरसरास सुधादिवक्त्रे कावात्मवृत्तिर्धनाद्ध विरङ्गवाति विष्णोः कलास्य निमिषोन्नकरो विष्णोः कलास्य निमिषोन्मकरौ च कर्णौ उद्विग्नमीनयुगलं द्विजपङ्क्तिशोचिर् आसन्नभृङ्गनिकरं शरइन्मुखं ते योऽसौ त्वया करसरोज हतः पतङ्गो दिक्षु भ्रमन् भ्रमत ए जयते क्षिणी मे मुक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टो नीलो हरते लम्पट एष नीवीं रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोघ्नं ह्येतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धं चर्तुं तपोर्हसि मया सह मित्रमह्यं किं वा प्रसीदति सा वै भवभावनो मे न त्वां त्यजामि दयितं द्विजदेवदत्तं यस्मिन् मनोदृगपि नो न वियाति लग्नं मां चारुशृङ्गर्हसि नेतुमनुव्रतं ते चित्तं यतः प्रतिसरन्तु शिवाः शचिभ्यः। श्री शुक उवाच इति ललनानुनयाति विशारदो ग्राम्यवैदग्ध्यया परिभाषया तां विबुधवधूं विबुधमतिरधिशभाजयामास सा च ततस्तस्य वीरयूथपतेर्बुद्धिः शीलरूपवयः श्रियौदार्येण पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुतायुत परिवत्सरोपलक्षणं कालं जम्बूद्वीपपतिना भौम स्वर्गभोगान् बुभुजे तस्यामुहा वा आत्मजान् स राजवर आग्नेन्द्रो नाभि किं पुरुष हरिर्वर्षे लावृत रम्यक हिरण्मय कुरुभद्राशुकेतुमाल संज्ञान् नव पुत्रानुजनयत् सा सुत्वाथ सुतान्नवानुवत्सरं ग्रह एवापहाय पूर्वचित्तिर्भूय एवाजं देवमुपतस्थे आग्नेन्द्रसुतास्ते मातरनुग्रहादौत्पत्तिकेनैव सङ्घन्नवलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यथाभागं जम्बूद्वीपवर्षाणि बुभुजः आग्नेन्द्रो राजा तृप्तः कामानाम् अप्सर समेवानुदिनम् अधिमन्यमानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिभिर्वारुन्ध यत्र पितरो मादन्यते सम्परेते पितरि नवभ्रातरो मेरुदुहितृर्मेरुदेवीं प्रतिरूपाम् उग्रदृष्टिं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिम् इति संज्ञा नवोदवहन्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्धे आग्नेन्द्रवर्णनं नाम द्वितीयो अध्यायः।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ तृतीयो अध्यायः। श्री शुक उवाच। नाभिर्पत्य कामो अप्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषं बहितात्मायजत्। तस्य हा वाव श्रद्धया विशुद्धभावेन यजतः प्रवर्गेषु प्रचरत्सु द्रव्यदेशकालमन्त्रित्विग्दक्षिणा विधानयोगोपपत्त्या दुरधिगमोऽपि भगवान् भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानम् अपराजितं निजजनाभिप्रेतार्थ विधित्सया गृहीत हृदयंगमं मनोनयनानन्दनावयवाभिराम आविश्चकार। अथ हा तमाविष्कृत भुजयुगलद्वयं हिरण्मयं पुरुषविशेषं कपिश कौशेयाम्बरधरमुरसि विलसत् श्रीवत्स ललामं दरवर बनरु हवनमालाच्छूर्यमृत मणिगदादिभिरुपलक्षितं स्फुट किरण प्रवर मुकुट कुंडल कटक कटिसूत्र हार केयूर नूपुराद्य अंग विभूषण विभूषित मृत्विक सदस्य गृहपतयोधना एवोत्तम धनम उपलभ्य सबहुमानम अर्हणेनावनत शीर्षाण उपतस्थुः। श्री ऋत्विज ऊचुः। अर्हसि मुहुर्हत्तमार्हणम् अस्माकम् अनुपथानां नमो नम इत्येतावत्सद उपशिक्षितं कोर्हति पुमान् प्रकृतिगुण व्यतिकरमतिर्नीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयोर अर्वाक्तनाभिर्नाम रूपाकृतिभिः रूपनिरूपणम् सकल जननी काय व्रजिन निरस नशिवतं प्रवर गुण गणैकदेश कथनाद्रते परिजनानुराग विरचित सबल संशब्द सलिल सितकिशलय अतुलशिका दूर्वांकुरैरपि संभृतया सपरयया किल परम परितुष्यति। अथानयापि नाभवत इज्योरुभारभरया समुचितम् अर्थम् इहोपलभामहे। आत्मन एवानुशवन मंजसाव्यतिरेकेण वो भूयमानाशेष पुरुषार्थ स्वरूपस्य किंतु नाथाशिष आशासानान् आमेतद अभिसंराधन मात्रं भवितुमर्हति। तद्यथा बालिशानां स्वयं आत्मनः श्रेयः परम विदुषां परम पुरुष प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानं चापवर्गाख्यम् उपकल्पयिष्यन् स्वयं नापचित एवेतर बदिहोपलक्षितः। अथायमेव वरो ह्यर्हत्तं यर्हि ब्रह्मर्षि राजर्षिर्वरदर्शभो भवान्निज पुरुषेक्षण विषय आसीत्। असंग निशित ज्ञानान् लविधूता शेषमलानां भवत्स्वभावानाम् आत्मा रामाणां मुनीनाम् अनवरत परिगुणित गुणगण परम मंगलायन गुणगण कथनोषि। अथ कथञ्चिस्खलन क्षुत्पतन जृंभण दुर्वस्थानादिषु विवशानां नः स्मरणाय ज्वर मरण दशायामपि सकल कश्मल निरसनानि तौ गुणकृतनाम ध्येयानि वचनगोचराणि भवन्तु। किंचायं राजर्षिर्
उपत्यकामः प्रजां भवादृशीम् आसानाम् ईश्वरम् आशिषां स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तम् उपधावति। प्रजायाम् अर्थप्रत्ययो धनदम् इवाधनः फलीकरणं को वा इहि ते अपराजितो अपराजितया माययान्वशित पदव्यानावृतमतिर्विषये विसर्यानावृत प्रकृतिर अनुपासित महच्चरणः यदुहा वाव तौ पुनरद्भ्रकर्तर्हि समाहूतस्तत्रार्थाधियां मंदानां नस्तद्देव हेलनं देवदेवार्हसि साम्येन सर्वान् प्रतिबोढुं विदुषाम्। श्री शुक उवाच इति निगदेनाभिष्टूयमानो भगवान् निमिषर्षभो वर्षधराभिवादिताभिवन्दितचरणः सदयमिदमाह। श्री भगवान उवाच अहो बताहमृषयो भवद्भिर्वितथे वरं सुलभम् अभियाचितो यदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूपः कैवल्यादत्तापि ब्रह्मवादो नामृषा भवितुम् अर्हति। ममैव हि मुखं यद् द्विजदेवकुलं तत् आग्नेन्द्रियं सकलयावतरिष्याम् आत्मतुल्यम् अनुपलभमानः। श्री शुक उवाच इति निशामयन्त्यां मेरुदेव्याः पतिमभिधायान्तर्दधे भगवान् बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभेः प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितुकामो वातरसनानां श्रमणानां रसेना मूर्ध्वमन्थिनां शुक्लया तनुवावतार। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्धे नाभिचरिते ऋषभ अवतारो नाम तृतीयो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ चतुर्थो अध्यायः। श्री शुक उवाच अथ हा तमुत्पत्त्यैवाभिव्यज्यमान भगवल्लक्षणं साम्योपशमवैराग्यैश्वर्ये महाविभूतिभिरनुदिनम् एधमानानुभावं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवताश्चावनितलसंवनायातितरां जग्रधुः तस्य हा वा इत्थं वर्ष्मणा वरीयसा बृहच्छलोकेन चौजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याभ्यां च पिता ऋषभ इतीदं नाम चकार। तस्य ह्रीन्द्रः स्पर्धमानो भगवान् वर्षे नववर्ष तद्वधार्ये भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्यात्मयोगमायया स्ववर्षम् अजनाभं नामाभ्यवर्षत्। नाभिस्तु यथाभिलषितिं सुप्रजस्त्वम् अवरुध्यातिप्रमोदभरबिहुवलो गदगद आक्षरया गिरा स्वैरं गृहीत नरलोकसधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं मायाविलसितम् अतिर्वत्स तातेति सानुरागम् उपलालयन् परां निर्वृत्तिम् उपगतः। विदितानुरागम् आपौर प्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजं समयसेतुरक्षायां भिषिञ्च्य ब्राह्मणेषूपनिधाय सह मेरुदेव्या विशालायां प्रसन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासीनः कालेन तन्महिमानं वाप। यस्य हा पाण्डवेय श्लोका बोधाहरन्ति को नु
कर्म राजर्षेर्नाभिरन्वाचरेत् पुमान् अपत्यताम् अगाद्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नाभिर्विप्रा मङ्गलपूजिताः यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासुरोजसा। अथ हा भगवान् ऋषभदेवः स्ववर्षं कर्मक्षेत्रम् अनुमन्यमानः। प्रदर्शित गुरुकुलवासो लब्धवरैर्गुरुभिरनुज्ञातो गृहमेधिनां धर्मानुशिक्षमाणो जयन्त्याम् इन्द्रदत्तायाम् उभयलक्षणं कर्म समाम्नायां तमभियुञ्जन्नात्मजानाम् आत्मसमानानां शतं जनयामास। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुण आसीद्येनेदं वर्षं भारतमिति व्यपदिश्यन्ति। तमनु कुशावर्त इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलयः केतुर्भद्रसेन इन्द्रश्प्रग्विदर्भः कीकट इति 99 प्रधानाः। कविर्हरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः। श्लोक था ये। कविर्हरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्च मसः करभाजनः। नहीं, आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः इति भागवत धर्मदर्शना 9 महाभागवतास्तेषां सुचरितं भगवन्महिमोपबृंहितं वसुदेव नारद संवादम् उपसमायनम् उपरिष्टाद् वर्षणिष्यामः। यवीयांश एकाशीतिर्जायन्तेयाः पितुरादेशकरा महाशालिनां महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्मविशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः। भगवान् ऋषभशृङ्गे आत्मतन्त्रः स्वयं नित्यनिवृत्तानर्थपरम्परः केवलानन्दानुभव ईश्वर एव विपरीतवत् कर्माण्य आरभमाणः कालेनानुगतं धर्मम् आचरणे नोपशिक्षयन् न तद्विदां शम उपशान्तो। मैत्रः कारुणिको धर्मार्थयशः प्रजानन्दामृतावरोधेन ग्रहेषु लोकं नियमयत्। यद्यच्छीर्षण्याचरितं तद अनुवर्तते लोकः। यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शितं मार्गेण सामादिभिरुपायैर्जनतामनुशशास। द्रव्यदेशकालवयः श्रद्धर्त्विग् विविधोद्देशोपचितैः सर्वैरपि क्रतुभिर्यथोपदेशं सत्कृतो इयाज। भगवत्तर्षभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वाञ्छत्य विद्यमानमिवात्मनोऽन्य इस्मात् कथञ्चन किमपि कर्हिचिद्वेक्षते। भर्तयनुशवनं विजृम्भित स्नेहातिशयम् अन्तरेण सा कदाचिदात्मानो भगवान् ऋषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षि प्रवरसभायां प्रजानां निशामयन्तीनाम् आत्मजान वहितात्मनः प्रश्रय प्रणयभर सुयन्त्रितन् न अप्युपशिक्षयन्निति होवाच। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कन्धे चतुर्थो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। जो भी गलतियाँ हो गई हों उसे क्षमा करिएगा। संस्कृत पढ़ने में मुझको नहीं आती।